Hi friends, I am Preeti Agwal. Welcome to my channel. In my videos of logical reasoning, बहुत क्लियरली मैंने एक्सप्लेन किया था कि अगर आप कुछ टॉपिक ही कर लेते हो लॉजिकल रीजनिंग के तो आपका ये यूनिट कवर हो जाएगा फॉर जीसेट एज वेल एज नेट एग्जामिनेशंस के लिए। फिर भी कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में ये डाउट रहता है कि क्या रियली लॉजिकल रीजनिंग जो कि इतना बड़ा यूनिट है कि सिर्फ 4-5 ये टॉपिक कवर कर पाएंगे हमारे क्वेश्चंस को। लेट अस सी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस जो कि जीसेट में पूछे गए हैं एंड नेट में पूछे गए हैं। सी, ये 2022 का पेपर है जीसेट का। Which of the following diagrams correctly represents the relationship among tennis fans, cricket players and students? सिलोजिज्म को हम दो वे से सॉल्व करते हैं, एक वेन डायग्राम से एंड एक एनालिटिकल मेथड से। सी, दिस इज अ वेन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस। Here, this is the next question. Umpire is related to match in the same way as judge is related to. This is also part of logical reasoning. Hai. Next question, which is based on the statements. Different type of propositions होती हैं, then different types of conclusions होते हैं. ये topic मैंने बहुत अच्छी तरह से cover किया है. In question below is given a statement followed by assumptions numbered 1 and 2. Consider the statement and decide which of the given assumption is implicit. Statement है आपके, if you want to give any advertisement, give it in newspaper. X A tends to B. Statement बहुत clear है. Assumption है B wants to publicize his products. Second assumption है newspaper X has a wide circulations. अभी देखिए, only assumption 1 is implicit. Implicit, explicit, circulations, and then lot of definitions which I have covered. Right? Either first or second is implicit, neither first nor second is implicit. तो इसके लिए आपको implicit definition क्या होती है, that you will have to go through the topic different type of definitions. Next question है, the distinction between logic and allokic is made reference to which one of the following pramans? इंडियन लॉजिक में बहुत अनुमान का, प्रमांस का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, excuse me, which I covered thoroughly. For your answers, you will have to message me. For the next term of given series, sequential, equential, equating, and this. देखो इसको ध्यान से देखोगे. फर्स्ट इज योर सिक्वेंशियल, सेकेंड में उसने एस को इरेज किया हुआ है, थर्ड में लास्ट वाले वर्ड्स को इरेज किया गया है. तो ऑफ कोर्स अभी यहाँ वाला आएगा तो उसमें फर्स्ट वाले कुछ लेटर्स को वो इरेज करेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेसेस व्याप्ति. व्याप्ति भी एक इंडियन लॉजिकल का एक वे है. सो ऑन दैट टॉपिक दिस क्वेश्चन इज बेस्ड, राइट. नेक्स्ट देखिए, another few questions from the GSET examination. Which of the following statements are true in context of Vyapti? Again, Indian logicals के ऊपर बेस्ड है ये क्वेश्चन, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following indicates the best relationship between travelers, train and bus? Again, Venn diagram based question. Now, these are the questions which I have taken from net. This will also give you the assurance that the topics which I have covered in logical reasoning videos, only from that topic the questions used to be asked.
When the conclusion of an argument follows from its premises necessarily, the argument is called. ऐसे argument को हम क्या कहते हैं? Deductive कहते हैं या analogical कहते हैं, inductive और circular argument. Different types of argument में हमने ये किया हुआ है. वैसे भी आर्ग्यूमेंट जो किसी प्रीमाइसिस जो नेचुरली प्रीमाइसिस से हैं तो उस आर्ग्यूमेंट को हम डिडक्टिव ही कहेंगे. नेक्स्ट देखिए, एवरी लॉ इज एन एविल, फॉर एवरी लॉ इज एन इन्फ्रिक्शन ऑफ लिबर्टी, द एबव इज. ये क्या है? एक्सप्लेनेशन ऑफ फैक्ट्स है, अ प्रोपोजिशन ऑफ फैक्ट्स है, या फिर कोई आर्ग्यूमेंट है, या फिर जस्टिफिकेशन ऑफ बिलीफ. बिलीफ तो है ही नहीं इसमें कुछ, कोई फैक्ट भी नहीं है. फैक्ट मतलब दैट इज अ थिंग विच इज रियली ट्रू. सो दैट यू विल हैव टू थिंक व्हाट इट इज. अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगेन असर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन है. ऑनेस्टी इज अ ग्रेट पॉलिसी. ऑनेस्टी डज नॉट have any way. Both A and R are true, but R is not the correct explanation of A. Right? Both A and R are true, and R is the correct explanation of A. A is true, R is false. And then R is true, A is false. If you will see the statement, what does this statement say? That is, honesty is the honesty does not. Statement है, honesty is a great virtue. Honesty does not harm anybody, right? So, but R is not the correct explanation of A. So that is why what is true, so that you will have to select it. Given below are two premises, 1 and 2. 4 conclusions are drawn from them, taking singly or together. ये मैंने A type, B type, A, E, I, O, all that types are there for the different types of syllogisms, and that I explained very nicely. Some prisoners are dacoits, some dacoits are murderers. Conclusion है, some prisoners are murderers, all prisoners are murderers, some dacoits are prisoners, and some murderers are dacoits. ठीक है, इसका जो रिलेशन था वो क्या था? सम आता है तो ऑफकोर्स सम ही आता है. सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट का रिलेशन था, सो दैट यू विल हैव टू चेक इट. Next, among the following propositions, two are related in such a way that both of them together can't be false, although they may both be true. Select the code that states those two propositions. All students are intelligent. Some students are intelligent. No students are intelligent. Some students are not intelligent. All students are intelligent. अगर मैं ये बात कह रही हूँ, some students are intelligent. Of course, if I am saying कि which students intelligent, and then what is no students are intelligent, and then some students are not intelligent. Okay? Some और no का तो कोई relation ही नहीं होगा, तो of course some का relation some के साथ ही होगा. So then you can easily find out your answer. So feel free if you want to discuss any topic in detail of logical reasoning, or for verifying your answers, do message me. Till the next video, goodbye. All the best. Exams are approaching. Prepare well. Wherever you need my help, do message me, and I'm quite happy that there are a lot of responses I'm getting from you people.